So good afternoon, everyone. This is Deepak Pareek. I'm founder of HnyB's and AgriFee, and many of you would have seen me talking at various forums, various events. At the same time, also on some of the media channels, including CNBC, Z, etc. Today, we have decided that we will be talking about something which has been a boiling pot in pulses community. And that boiling pot is for sure, right? We all know the pigeon pea as well as chana. And chana is more relevant for very simple reason that we have seen that there have been some government policies which could eventually impact chana as well. And going forward, I would request my dear friend Rahul ji to present his views and what he see as an outlook going forward in chana. And we all know that IGrain, which has been a pioneer when it comes to actually sharing information related to various commodities across India, as well as exam data on the commodities being traded in India, whether it is pulses, grains, oilseed. They have taken a pioneering position in the agriculture commodity analysis. Over to you, Rahul Bhai, if you are there. I think it seems to be a little bit of challenge. Rahul Bhai's internet connection, I think it's dropped down. So I would request Tanmay ji, can you go first by the time Rahul ji joins? If that is okay. No issues, Deepak ji. Perfect. Over to you, sir. Thank you. So I'm just 1 second. I'm sharing my screen. Yeah, Deepak ji, can you please allow me to share my screen? Tanmay, I think now you can share it because I've allowed it. Yeah, it is okay. Thank you. Hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Please. Yeah, thank you. So, good evening, everyone. I'm Tanmay Kumar Deepak, Head of Research in AgriWatch. So today I'll be talking about the chana, basically crop or the production scenario, and the price outlook of chana in near future. So to start with, I'll first talk about the chana sowing progress. So as you can see, till yesterday, that is December 22nd, the overall chana acreage is down by almost 9 lakh hectares, which is 9% less than the last year, and almost 7% lower than the normal area, which is given by the Department of Agriculture. So the basic reason for this decline in acreage of chana is mainly the higher prices of lentils, peas, and yes, of course, the Kabuli chana. Basically, the Kabuli chana performance throughout the season was very excellent, and I think we have our panelist, Mr. Navneet ji, who has the domain expert, so he will definitely discuss on this Kabuli part later. So these are the three main pulses because of which the acreage of chana has reduced this particular season. And earlier, the Malwa region, which happens to be the Kabuli belt, and before that, the lentil belt, is again now turned to be the lentil belt. Lentil acreage has gone up in Malwa region once again this year. And because of this, some Kabuli area has also diverted towards lentils. And of course, the main reason why farmers are opting this lentils is mainly due to the higher MSP announced by Government of India.
And one thing which we at AgriWatch has noticed that the Kabuli area has increased mainly in the Nimad belt, which is the basically the Khandwa Khargone area of MP, and along with some area of Maharashtra, the adjoining areas of Maharashtra, mainly in Vidarbh side. So earlier there was an apprehension or anticipation that the Kavli acreage will go up significantly this year. Yes, there is some increase in Kavli acreage, but we at AgriWatch don't think that Kavli acreage will increase so significantly. So coming to our preliminary production estimates for chana. So what we have did, our internal GIS team is working on estimation of chana acreage, which may take a few more days. So as of now, we have considered the government acreage till yesterday only to project the production numbers, and yield numbers for the current year we have considered on a 5 years average basis, or we can say it the normal yields we have taken. So overall production during the current year, the crop year 23-24, is going to be 86.6 lakh tons. And it is a decline of almost 8% over last year. So important part here we need to understand, last year also we had a lower crop. According to us, it was 94 lakh tons. And again, this year, we are again going to have a lower crop. So back to back, we are having 2 consecutive years lower production. And at present, the yield which we have considered, since we are into super El Nino conditions, and super El Nino conditions is going to prevail, I think, till Feb March. So it is also likely that the yields, when the crop will enter into its reproductive phase, which is the flowering or pod formation, the critical stages of the crop. So at that point of time, uh, the temperature going to be very critical to watch, because this rising temperature, because of this super El Nino conditions, I think it would hurt the yields moving ahead. And as of now, as we all know that winter is not so good. Even the temperature during November and so far in December, it is higher than the long period average. So there is an apprehension that the duration of winter will be shorter than normal, and the temperature post I think we can say mid January onwards, there is an apprehension that temperature will take a sudden rise. So moving ahead, is going to be a factor which everyone has to need to watch very closely, because this 86 lakh tons which we have right now, which we have predicted, may go down further. So this is our supply demand scenario based on the preliminary estimates. So opening stocks is almost 36% lower for the upcoming marketing year, and production, as I said, is already almost 8% lower. Imports here we have taken slightly on a higher side, which is well within the range, because we are anticipating that because of this lower production, Tanzania may try to push more chana into India. So imports numbers we have considered on a slightly higher side. So overall supply is going to be almost 12% lower than last year. Exports we have kept as it is, because mostly we are exporting Kabuli variety only. And yes, because of overall declining supply, the consumption number has adjusted accordingly. And important part which everyone need to understand, the stock to use ratio, which should be which normally should be around 15 to 20%. It has came down drastically in last 2 years, from 11% to 1.8%, or almost 2%, which is almost nothing. So we are going to have a very tight supply scenario,
moving ahead in the coming marketing year. And if we relate this current balance sheet for 23-24 with and 24-25, we can have the closest identical year. The closest identical year was 2015-16 and the 16-17 year, when more or less same conditions existed. And at that time, uh, production was impacted because of back-to-back droughts. But here, the production got impacted because of shifting of acreage. So some of the factors which need to be watched because of this tight supply scenario. Yes, there will be a support in prices, but since because the recent government decisions which government has taken, opening of yellow peas import, and because of this decision, the price crash we have seen in almost all the pulses, including chana, pigeon peas, urad, and other pulses as well. So few other factors which we need to closely monitor is one, the import duty decision on chana, whether government is going to lower the import duty or not. The distribution of Chana Dal. Why distribution of Bharat Chana Dal? Because right now government is almost carrying 16 or 17 lakh tons of chana, and from their buffer they are also distributing this chana. Uh, they are also diverting this chana for this Bharat Chana Dal manufacturing. So how much more chana they divert for this Bharat Chana Dal, that is going to be a very important point, because the buffer stocks depends on this distribution of Bharat Chana Dal. And of course, uh, what will happen to the yellow peas timeline post 31st of March, that would be again a important factor, because if government extends the yellow peas imports timeline, then we may see some further fall in prices of chana. And lastly, the government procurement strategy for their buffer stocks. Uh, as of now, some reports are floating in the market, like government may buy at a market price during the upcoming season to build their buffer. So whether they are going to buy at MSP or at market price, these two factors need to be watched very carefully. If the MSP buying is there, then I don't think their prices will be impacted much. But if government will buy at open market prices to build their buffers, so I think it would support the prices moving ahead. So this is the price outlook based on the Bikaner chana spot prices. So as we can see, there is a pattern breakout, and in fact, before the pattern breakout, when the prices of Bikaner chana was at around 6,400 levels, at that time only the chart has pointed that the strength that the prices or the chart is losing strength, and now the pattern breakout, which is basically the descending triangle breakout, is there, and its objective is likely at around 5580 levels, where we can expect some consolidation in prices. And at that point of time, how the factors changes, or how the market gets the direction, uh, the price direction will depend basically on the factors which will be there at that point of time. And one thing one should keep in mind, that the first horizontal red line, that is the 5441 level, is going to be a critical level. Somehow, if prices falls or breaches below these levels, then one can expect that price may touch around 5100 levels. So, Deepakji, that's it from all. That's all from my side. Over to you, Deepakji.
Yeah, thank you, Tanmay. Very, very interesting. So actually, I would like to just ask you a couple of questions before we get into the next speaker. Sure, See, sure. you have shown that actually this is scenario which was happened in 1617 as well, right? Yeah, So if I can recall in 2015, right, the chana price was where actually it is today. Typically, it was around 60 to 63 rupees. Then suddenly we saw that in July 2016, it rose up to 80 rupees. And by correct. October, it has already breached 120 rupees per Correct. kg, right? Only difference this year and that year was that it was actually in NCDX. Chana was traded in NCDX futures as well. Do you see that similar scenario can emerge in case we have maybe not 120 because the futures are not there, so speculation would be less, but only strongly going on supply and demand. If assuming that the productivity, in fact, I was in Madhya Pradesh as well as in Rajasthan, the typically chana growing belt, and the farmers were having a little bit of question mark that about the productivity themselves, because they found that weather pattern to be not very suitable. While they say Right. that rain has helped because the moisture level is high, but unfortunately, because the 3-degree higher temperature than actually the previous long-term average, there would be a possibility of lack of your chana productivity would be less. Secondly, in Gujarat, I've seen that a lot of farmers they switched to Kabuli from actually the Bengal gram, the desi chana. So do you see that if let's assume the figure is as what you said lesser than previous year, and could be even a little bit. I'm saying that we have been optimistic. I would be very frank with you. I see it still further couple of percent less than that. If that scenario emerges, do you see that there would be a serious challenge in maintaining price for the government for this? Yes, of course, Deepak ji, there would be a challenge with government to maintain the prices. And one important part which I have also mentioned in during my presentation also that this yellow piece timeline extension. This is going to be a very critical thing which one should close very closely. Why? Because if government extends the timeline, then I don't think that prices will increase as it is expected based on the supply demand scenario. Because the substitute availability of substitute will increase in open market, and if this deadline if the deadline is not increased by 31st of March, then of course we may see a sudden rally in chana prices. So everything dependent on this deadline or the timeline of the yellow peas extension, whether it is going to be extended or not. And of course, the second point, because government, I think government is also aware that what is happening in chana acreage part or how the production is going to be. So I think they will also try to keep the prices as the elections are nearing. So they would definitely going to try to keep the prices at lower side. So I think if any kind of abnormality comes in prices, so they have this option also to lowering the chana import duty. So two, three factors are definitely there, which is going to be a very important part of this price movement or the which will basically give the prices direction moving ahead. So as of now, considering that if the timeline is not extended for yellow peas and the duty in chana import duty is not reduced, so we may expect that prices will definitely bounce. Perfect. Thanks a lot, Tanmay. We'll talk a little bit more on the government's opening up of imports of yellow pea in our panel discussion. Now, I would request Rahul Bhai, as when I was praising Rahul Bhai, unfortunately he was not online, so I'll repeat myself. Right, Rahul Bhai has been IGrain has been doing fabulous work in getting the grassroots level data from all across India, and have been pioneers and doing this work for multiple years, and majority of what he has predicted over past few months has been bang on. Just like Tanmay also, in fact, I have opportunity of working with Tanmay. Just as a caveat, people should know that actually I have headed AgriWatch some time back, and I have a very high regards for Tanmay, and I'm yet to find his call being going wrong so far, and wishing all the best in future. Also, he keep on giving the right calls. Over to you, Rahul Thank you very Bhai. much, Deepak ji.
there is some problem with Deepak. So I'll start. I think there is some technical issue with. Not an issue. आप you can speak out. राहुल भाई, आपकी आवाज के अंदर बहुत ताकत है. आपकी आवाज से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं वैसे भी सर पल्सेस में तो प्रॉब्लम है ही, टेक्निकल प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है. So not a problem if like slides are not opening up. आ रही है आवाज आ रही है. I'll start sharing screen first. Excellent sir, excellent. और तन्मय जी ने इतना कुछ बोल दिया है, अब हमारे पास कुछ बचा है नहीं. अरे नहीं राहुल जी, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है. मैंने सर अभी ये किया है, अपना सर्वे किया था मेरी टीम ने. उस बेसिस पे आई विल शो भाई देयर आर सम प्रॉब्लम विद दिस. यस, let's start. Yes sir. Thanks Deepak for inviting me on this as a panelist. So I will start with the sowing data. Sowing data must have been shared with the Tanmay ji, Deepak ji also. So I have added two more things in which on the left hand side you will see that this is the rainfall from 1st of October till date. So you will see red pattern and yellow pattern in Maharashtra and Karnataka. Maharashtra is one of the most leading producer of chana. In Gujarat also you can see that this thing that is also in a red zone, and Rajasthan is in good condition. So this is the overall rainfall happened in these months. And on the right hand side you will see the soil moisture health. You will see the most of the parts they are in reddish look. Few parts they are in green color. So reddish means the moisture content in this area is very less. And you will see the Maharashtra and Karnataka, they are mostly affected by this. Sowing is lesser than last year, and due to rainfall issues, we might see production losses in many states. So this is the survey which I have done with my team. Slowly I will move it in Maharashtra, like in Amravati, sowing is lesser than 30 to 35%. Daryapur also sowing is less. Latur also sowing is less. And overall condition seems to be better in Maharashtra, but the sowing is lesser in most of the part. Like you will see in Dudhni, Ahmednagar, it's equivalent to last year. In Agrocorp, the sowing is less than 15 to 20%. Washim also, Khangaon also, sowing is less. In some of the part, due to this cyclone, the sowing is damaged. The charana crop is damaged, and some of the farmers they have to re-sow the charana also. So that's an issue in Maharashtra. In Rajasthan crop condition seems to be better. And Kekli crop is very good. Rainfalls benefited the crop. Kishangarh, the sowing is a little less, but rains are needed for this crop. So overall, if you see in each and every part, due to this El Nino effect, due to wrong pattern of rainfall, all the major producing states or major producing mandis areas, they have some concerns. In Sumerpur, you will see the sowing is less than 15 to 20%. Noka sowing is also less. Jodhpur mein, if you see that sowing is less and water, cold weather is needed, like Deepak Bhai Tanmay Bhai has told us. In some of the part, the water is needed for the crop. In Madhya Pradesh, sowing in Bina, sowing is equivalent. In Madhya Pradesh, the overall condition seems to be better. And in Ganpasuta, sowing is less than 25 to 30%. In some of the parts, people they have moved from sowing of chana to wheat and mustard, because wheat prices, everybody knows that they are very attractive. In some of the part of the Rajasthan, you will see the most of the farmers they have preferred sowing jeera and isabgol and other crops because the prices were very attractive. Now I'll come back to Madhya Pradesh. In Piparia, sowing is lesser than 15 to 20%, and rains during sowing they have entered the base of sowing. Kareli crop condition is good. So you will see that in Madhya Pradesh crop seems to be little better than Maharashtra and Karnataka. Karnataka, you will see
very Karnataka crop condition is not so good. In Gulbarga crop condition and the moisture level was good, but I'm sorry, due to less moisture content, the area has been reduced from 25 to 30%, and productivity may increase. In Bidar, crop is not in good condition, sowing is equivalent to last year, and rainfall and productivity, due to rainfall pattern, productivity may be dented. In Raichur, crop condition seems to be better, but the sowing is lesser than 15 to 20%. Farmers in Raichur, they have preferred jowar and groundnut. They have increased the area of the crops and reduced the area of chana. And Talikot crop seems to be good, and sowing is equivalent to last year. Like in Bagalkot, so Bagalkot sowing is less. Gadag maybe we will see less. Sowing is less. Bijapur maybe sowing lesser, but overall crop condition जो है in Karnataka, it seems to be very bad. Overall in Karnataka, chana sowing is lagging about 40% from last year. Now I'll come to crop condition. Crop condition in other states like Gujarat, Uttar Pradesh, no damage has been seen. Crop is okay, and in some of the parts in like in, near the Budelgand part, few of the areas they have received rains and they have damaged some of the crops. But overall, in rest other states, crops still seems to be better. Productivity will be better in this above states like Gujarat and Uttar Pradesh. So these are the import figures. From April to November, we have imported around 1.1 lakh tons of desi chana, mainly from Tanzania in financial year, which is more than the full financial year. Last year, 22-23, we have imported about 60,000 tons of chana. In financial year, it was 1.4 lakh ton for the complete year. And you will see the trend. Why import is decreasing? Because the prices in India, they were lower than MSP. So the import was less due to selling of government selling on good prices. The prices have been increased and the import was less. Now the prices are ready. You will see in August, September, October, November, the import is increasing in India. So on export front, we have exported about 26,000 metric tons of chana, which was 1.7 lakh ton in 2023 and 50,000 in 21-22. So I'll come to production. This year, I feel that the production seems to be 100 lakh tons, and it is lesser than 5 lakh tons than the last year. And opening stock was 20.65 lakh ton, and import for the complete financial year, I think it will be 1.5 lakh ton. So the full supply, complete supply will be 1 lakh, 122 lakhs for the on the supply side. Consumption is about 105 lakh tons. Consumption may decrease because we have allowed import of mutter. Mutter is the is a substitute of each and every pulses. Mutter can be consumed in any states, in any form, like in namkeen as a whole. So consumption, I feel if the import is extended, the consumption may further reduce. So after exporting 50,000 tons of chana, we will have 16.65 lakh tons of carry forward stock for the next year. And it is lesser than 4 lakh tons from the last year. So consumption, like I said, the consumption may decrease if the import date is extended, and prices, they may be under stress due to the above factor. And if the prices are less, then of course the government may procure more. And if prices are above MSP, the government might not be able to procure. So another sheet I will like to share why the prices they have moved from they were moved in 6 months. And in right hand side you will see the tender prices of Rabi 22 and 23 season. The sale tender prices in MP, they were 6,200, Rajasthan 6,420, Gujarat 6,251, Maharashtra 6,300. They are the maximum rates of the sale of chana. And if you see in the middle, there is a chart. It was the rates on which
government had sold chana in February 23. You can see the price difference. In this season, they have sold on good prices, and the prices have and the prices in local market, they were attractive for some moments. If you compare with last year, the chana prices were 4,850 something. Now they are prevailing about 6,000 So procurement, as I said, that procurement depends upon the prices during the arrival in the market. And in Rabi 2019, we have procured about 7.75 lakh tons of chana, because the prices were nearly equivalent to MSP. In 20, the prices were very less than MSP, and we were able to procure 21.4. Again, the prices improved in 21. The procurement was 6.3, and from last 2 years, the prices were below MSP. The procurement, it has been reached about 26 lakh tons. So I'll come on price front of view. Like as I told you that on Rabi 20, the prices were below MSP, and you can see in 21 they were 5,100 rupees. These are the average prices for the complete year. In 2023, the MSP they have announced 5,335. If the prices are below MSP, then the procurement of foods will increase. Otherwise, procurement will be on lesser side. If on short and long prospect, what I feel that due to tea imports and the coming elections, the government doesn't want to take any risk, and they want that food inflation, it should be under control, and consumer will get on chana every pulses on good prices. So I feel that chana will trend for short term. Chana will trend in on range bound, but if you after May or June, I feel if the production is less and the crop comes out, then I feel that chana will move ahead, and it will trade above MSP. That's all from my side. Thank you very much. Hello. Thank you, Rahul bhai. Very also that elaborate presentation. So Rahul bhai, can you stop sharing your screen so I can see you? Technology is getting. Wait a second. Question. I'm doing that. Right. So Rahul ji, I've done that stop sharing. So Rahul ji, like you are having a little bit more optimism, right, than Tanmay ji, right? So that's good. I think we need to have a multiple perspective. How do you see government? It's an election year, right? So definitely prices are a challenge. But how do you see the losses to the farmer? Do you see that challenge? Because if the prices remain below MSP, right? The government will also have to take then measures to procure more aggressively to ensure के किसान को भी कुछ मिले, because किसान एक कंज्यूमर भी है और एक वोटर भी है, और बहुत बड़ा वोटर है. चने का किसान तो इंडिया में 49% चना ही उगता है, तो उसका वोट का पावर थोड़ा बड़ा है. तो आपको लगता है कि कि वहां पे भी कुछ स्टेप्स आ सकते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू मेंटेन प्राइस अबव एमएसपी? देखिए MSP, last year जो prices they were below MSP, and they were very they have procured good quantity of chana. It depends upon MSP how much government procurement will be there. And in buffer stocks, if we compare total buffer stock, the quantity of chana, it was much higher than any pulses, and they have to increase their buffer stocks. They have started importing. Procuring or purchasing imported lentils also. They have imported turra also. They have started doing that. On farmer point of view, I mean to say that the government will do anything to procure this chana, and they know if they have the stocks with them, market will not behave aggressively. And on farmers' point of view, only 20 to 25% of farmers they sell to government. Rest of the farmers they sell to open markets. If the prices are below MSP, then farmers will again it will dent their incomes also. They might not like this in future. Perfect.
Thank you, Rahul ji. Like, very, I should all congratulate you. Very exhaustive presentation. Thank you for that. And it's good actually. We have two research company having a little bit different take, right, on the chana. Now I would like to go to Navneet ji. Navneet ji, I know that you are within, season is going on and Kabuli thoda sa, right? ऐसी क्रॉप है कि जिसके अंदर झटके जड़े बड़े लगते हैं. चना तो अगर 500 रुपए गिर जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ना वर्ल्ड वॉर हो गया होगा. लेकिन आपकी काबुली में तो 500 1000 कोई छोटी बात नहीं, ऊपर नीचे होना. सो ओवर टू यू सर. थोड़ा काबुली पे हमको ज्ञान दीजिए. एंड फॉर ऑल दोज हु हैव बीन पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वेबिनार, Navneet ji is an authority. I would say is an institution when it comes to Kabuli, right? मेरे हिसाब से जो भी बड़े ट्रेडर्स और छोटे ट्रेडर्स जो काबुली के अंदर रेगुलरली काम करते हैं, और इवन एनालिस्ट लाइक मी, राइट, we look forward to Navneet ji, for what he thinks about the market, और इनका डेटा what he is having is immaculate, right? In fact, research agencies भी जो जिन के साथ मैंने काम किया अभी तक, right, I've seen that उनका भी काबुली पे इतना होल्ड नहीं है जितना नवनीत भाई के पास है. So Navneet ji, over to you, sir. काबुली के बारे में बताइए हमें. He's the king of Kabuli chana. मैं डबल के बोला ना, इसलिए मैं काबुली किंग. धन्यवाद दीपक जी. पहले तो धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी काबुली इंडस्ट्री, इतनी बड़ी देसी इंडस्ट्री का आपने पैनल रखा. जो इतनी बड़ी क्रॉप है उसमें काबुली छोटी सी क्रॉप है, तो उसमें आपने मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया. थैंक यू. सर, काबुली की अगर हम बात करें तो सर काबुली चना, देखिए अगर हम इसको लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें, लास्ट ईयर जो हमने ग्लोबल डाटा दिए और जो हमने ग्लोबल जीपीसी में या आईपीजीएमए में जो हमने सेमिनार्स किए, उसमें हमने जो एक क्रॉप आइडिया बताया वो करीबन 3.5 लाख टन पूरे इंडिया बेसिस का हमने निकाला, जिसमें आंध्रा भी आ गया, गुजरात भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया और मध्य प्रदेश भी आ गया. अभी तन्मय जी जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने एक बात लिखी है उसमें नीचे कि एरिया बड़ा है बट उतना सिग्निफिकेंटली नहीं बड़ा है. सो व्हाट आई वांट टू से, द काबुली अगर हम उसको देखें और जितना अभी हम स्टडी कर पाए, अभी भी कई जगह द सीडिंग्स आर अंडर गोइंग. लाइक हमारे मध्य प्रदेश के एरिया में कहीं हरा मटर निकल के काबुली की सीडिंग्स चलती हैं, तो कई जगह हरदा खातेगांव तरफ भी अभी सीडिंग्स चल रही हैं. सो आई मस्ट से कि सीडिंग्स हमारे यहाँ बड़ी हैं, लास्ट ईयर से बड़ी हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्राइसेस. बट मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर मैं कई जगह 30% बढ़ी है, कई जगह 50% बढ़ी है, कई जगह डबल हो गई, बट आई मस्ट से द सीडिंग अगर मेरे को उसको एक शॉर्ट में करना हो तो मैं कह सकता हूं कि लास्ट ईयर से 40 से 50% काबुली के एरियाज में सीडिंग बढ़ी है. अब 40 से 50% अगर मैं उसको, क्योंकि हमारे पास काबुली का कोई ऐसा लैंड बैंक का डाटा नहीं है, बहुत स्कैटर्ड है, और तो हम उसका जो प्रोडक्शन से नंबर लगाते हैं, अगर लास्ट ईयर हम 3.5 लाख टन का प्रोडक्शन समझ के चल रहे हैं इंडिया लेवल पे, देन दिस ईयर इट शुड बी मोर और लेस, अगर हम उसको एरिया के हिसाब से समझते हैं तो हम उसको समझते हैं कि 5 लाख टन की फसल हो सकती है. बट एज आई सी द क्रॉप, what I see the crop in some areas, I am not very positive that the yields are good for this year. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. आपका अल्नीनो का रीजन है. मैंने कितने सालों में मैंने ऐसा हमारे यहाँ इंदौर के आसपास का वेदर नहीं देखा जो अभी कुछ समय पहले हुआ. 15 दिन तक धूप ही नहीं निकली. सो देयर आर चैलेंजेस इन द क्रॉप फॉर श्योर. सो कहीं भी हमें ये लगता है कि 5 लाख टन का इंडिया लेवल पे नंबर्स को टच करना मुझे ऐसा हार्ड लगता है आज की तारीख में इंडिया लेवल में. अगर अब हम इसको एक काबुली चना और जो हमारे यहाँ एक जो होता है जो कॉकटू, वीटू, विराट, इस तरह का जो 7-8 mm चना आता है, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो हो सकता है हम 3 लाख टन काबुली चने पे पहुंच जाएं और 2 लाख टन जो महाराष्ट्र, आंध्रा और मध्य प्रदेश के एरिया में जो छोटा माल निकलता है 7-8 mm का, हम वहां तक पहुंच जाएं अगर ये यील्ड्स सही आई तो. बट मुझे अगेन आई एम सेइंग इट इज, आई हैव अ डाउट ऑन द यील्ड्स फॉर दिस ईयर इन काबुली अगेन. सो दिस इज something about the production. For the consumption, India have a benchmark के minimum last year के जो भी प्राइस थे इंडिया के,
उसके हिसाब से भी हम करीबन हमने 2.5 लाख टन का डोमेस्टिक कंजम्पशन है हमारा, इतने हाई प्राइसेस के बाद भी। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन किसी साल में 2018 में हम डोमेस्टिक कंजम्पशन 4 लाख टन भी पहुंच गए थे। उसके पीछे ये था कि प्राइसेस बहुत ही लो थे। बट जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, काबुली इज अ प्रोडक्ट ऑफ होरेका इंडस्ट्री। तो आपके और मेरे घर में अगर महीने में एक बार काबुली चना बनता है और अगर नहीं बना, इट इज नॉट इफेक्ट कि हमें नहीं, हमारी डाइट में पता चलता है। जैसे तुअर की दाल हमें रोज खानी है, बट इट इज नॉट इफेक्ट कि काबुली हमारा सेम चीज चाहिए। तो काबुली इज अ प्रोडक्ट ऑफ होरेका। सो होरेका पीपल आर यूजिंग अल्टरनेट ऑफ दैट कि अगर महंगा, अगर मोटा वाला माल महंगा है तो हम छोटा यूज कर लें। जैसे इस साल हमारा इंपोर्ट करीबन 70,000 टन का हो गया, 60 से 70,000 टन का। तो ये सारा माल है जो पूरा लखनऊ, बिहार और इस बेल्ट में गया, जो सस्ता माल है, जो 75 रुपए से लेके 80 रुपए तक है। महंगे माल का होरेका इंडस्ट्री में अपने आप प्राइसेस हाई होने के कारण चेंजेस हो जाते हैं। तो ये डोमेस्टिक हमारा 2.5 लाख टन का बेंचमार्क है, इसको हम कभी भी ऊपर नीचे प्राइसेस के हिसाब से हो जाता है। एक्सपोर्ट का जो हमारा काबुली का बेंचमार्क है कि अगर हम अगर काफी सस्ते प्राइस हो इंटरनेशनली, उस टाइम कोई हमारा कंपटीशन नहीं हो, तो हम करीबन 1.5-2 लाख टन भी एक्सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज 75,000 से लेके 1 लाख टन, जैसे इस साल हमें लगता है कि हम 1 लाख टन का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक काबुली का सिनेरियो है इंडिया लेवल पे कि अगर हम नेक्स्ट ईयर को ध्यान में रख के हम 2.5 लाख टन का प्राइसेस हाई रहे और 2.5 लाख टन का या प्राइसेस कुछ कम हो क्योंकि क्रॉप बड़ी है, तो 3 लाख टन का कंजम्पशन, 50,000 टन इंपोर्ट, 1 लाख टन का एक्सपोर्ट। तो लास्ट ईयर भी हमारे पास, जब हम किसी भी क्रॉप में मद्दी जब आ सकती है या तेजी जब आ सकती है जब उसका कोई कैरी ओवर हो, अभी ये साल काबुली का कोई कैरी ओवर नहीं है। सो व्हाट आई मीन टू से कि बाजार काबुली में हमें देखना पड़ेगा, मार्च अप्रैल में बाजार अच्छे रहेंगे। देन वी नीड टू सी हाउ द यील्ड्स कम, देन वी नीड टू डिसाइड कि भैया यील्ड्स कैसी है। अच्छा, अभी उसके बाद हमें मैक्सिको का भी सिनेरियो देखना है। मैक्सिको में इस साल 100% का इंक्रीज हुआ है क्रॉप्स में। दे प्लांट अराउंड मोर देन 100,000 ऑफ लैंड हेक्टेयर्स। तो वहां का क्रॉप हमें ऐसा लगता है कि 2 से 2.25 लाख टन आएगा, विच इज द मोटा मोटा दाना। वहां पर जो होता है वो पूरा काबुली होता है, वहां हमारे यहाँ जैसा ये छोटा माल होता है वैसा नहीं होता। तो एक मैक्सिको एक हमारे लिए कंपटीशन है, बट जो भी मैक्सिको इंक्रीज करेगा वो हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज इंडिया में कितना इफेक्ट कर पाएगा। तो ग्लोबली मार्केट काबुली का अभी डिपेंड है इंडिया और मैक्सिको की यील्ड्स पे। एरियाज भी अंडरस्टैंड कि कितना एरिया बढ़ रहा है, बट अब हमें यील्ड्स पे देखना पड़ेगा कि यील्ड्स हमें कैसी आ रही। और कोई अगर सर कुछ होगा तो आप मुझसे पूछ सकते, बता सकते हैं। थैंक यू। Thank you Navneet ji, like very elaborate, like जो मैं आप स्टार्टिंग आपने किया उससे पहले जो मैंने बोला था, राइट, यू आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ काबुली, राइट। और आपने जो बोला, अब आई लव माय कुलचाज एंड छोलाज, और मैं ना दिल्ली के अंदर सड़क पे खाने में उस पर विश्वास रखता हूँ। अब मुझे लगता है वहां पे दाने छोटे और शायद उसमें येलो पीस भी लोग मिलाने लग जाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस एलोबरेट प्रेजेंटेशन फ्रॉम यू नवनीत भाई। Now I would request all our panelists, to start their videos. Sohil bhai, आपकी शक्ल दिखाइए. You are such a handsome person. I'm not able to see your video. And I don't know. Suddenly my video has stopped working. I don't know why. अरे आपका इतना अच्छा चेहरा देखने का मौका हाथ से निकल गया. बॉम्बे आना पड़ेगा आपका चेहरा देखने के लिए. So because see what we were sharing or what we were talking was little bit proprietary. So मैंने कहा जो public domain के अंदर through YouTube channel, LinkedIn चल रहा है, उसके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है. With your permission, is it okay if the panel discussion को हम रिकॉर्ड करें, which we can also use? I don't mind. Please go ahead. Satish ji, Tanmay ji, Rahul ji, Navneet ji, can we record? Of course, sir. Okay. Thank you. So I'm just starting recording. So I'll start with Sohil bhai, with you only, right? अब आप बाकी लोगों ने खासकर राहुल जी ने और तन्मय जी ने, they are more on analysis side, ट्रेड करते नहीं है. So ये लोगों को पैसा बनाना कैसे, डुबाना कैसे बताते हैं. आप पैसा बनाते भी हैं और डुबाते भी हैं. So आपका मैं व्यू लेना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि how do you see
that the trading community, specifically the large corporates like Agrocorp or like Olam's or the Valency's. So ये जो बड़े corporate हैं, how do they see like the chickpeas? I would request to start with the Desi, and also if you can intervene in Kabuli. What do you think like would be the overall mindset of the trading community? Actually, if you see, this is the historical month. December is a historical month where you see the demand is very, very less. And government has taken up a smart move by opening up the yellow peas. Okay. The prices are at the moment range bound, and it can correct up to, you can say, from the current levels, the Delhi price, which are at 60,000 a ton, it can correct up to 5850. And for time being, it can play up to 6500. Not much movement will be there, but going down, every dip is a buy at the moment. And I personally feel so government would not extend the yellow peas beyond 31st of March because of the elections. The UP has a big crop and they need to procure yellow peas from the farmers. So extending beyond 31st of March is not at all possible, which I feel so. And after 15th of January, the chickpeas prices shall move slow and gradually up, where demand also will be seen, and we may see another highs in February and March. Perfect. So now I'll go to you, Himanshu. Like, you also trade in chickpeas, right? You have been importing from Tanzania and Africa as well. And you have taken exposure in this commodity in past also. What is your view? How do you see the trading community, specifically the large traders like yours, right, would be taking call on chickpeas? Yeah, thank you, sir. And really thankful for being a part of this panel. In a nutshell, Valency, established in 2007, we are headquartered in Singapore, and we are fairly placed in this trading of couple of commodities, including pulses, and chickpea being one of them. I would say throughout the year, Chana has really played a roller coaster ride, and it has really shown some great levels this year. And government has also done a crucial job in bringing out couple of policies, as well as you can say initiatives done by NAFEDs, strong selling, a lot of things been done across the year to stabilize the prices. To answer your question, Deepak sir, I would say again I'll be completely aligned with Sohil ji on the same part that the prices right now are on slightly lower side. That's okay because of the again opening up of the restrictions of yellow peas. But what I feel is again every buy is a dip. What he's saying is right, because I personally feel that there is actually a strong red flag in terms of overall production of the crop, which I believe my counterparts was briefly talking about in the presentation, and strongly there is a support of weather anomaly as well. So what I believe is key, yes, there is a buy in every dip, and 57, 58, or maybe to very precise 57, 50 would be a great level on a downward side, and February or January mid will be a time when the prices will inflate up, because again मकर संक्रांति भी would be खत्म हो रही होगी उस वक्त, उसके बाद आपके पास नया क्रॉप आने के बीच में थोड़ा सा एक बफर मिलेगा, उस समय I believe would be a good time to go on for the same. So this is what is my take on this, sir. Excellent. Now I would like to go to Satish ji. Satish ji, you are wearing multiple hats, right? You represent one of the oldest organization in the sector. And sir, your views on the same? How do you see desi chana upar niche side bound, right? आपको क्या लगता है? And if you can also shed some light based on the type of data you access, being in IPGA, कि आपको प्रोडक्शन साइड क्या लगता है सर? क्या प्रोडक्शन में जो डिप बता रहे हैं तन्मय जी और राहुल जी, आपका भी व्यू पॉइंट वही है कि शायद इस बार कम होगा चना? सर आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. थैंक यू दीपक जी. अब हम लोग देख रहे हैं कि इस साल क्रॉप भी कम है, कैरी ओवर कम है, यील्ड कम है, खरीफ क्रॉप कम है, तो सारा सप्लाई साइड पे प्रेशर दिख रहा है. अच्छा, जहां तक चने की डाटा की फिगर आ रही है, अभी भी कन्विंसिंग नहीं हो रहा है. तन्मय जी की फिगर कम है, दीपक जी की फिगर थोड़ी ज्यादा है, गवर्नमेंट की फिगर और भी ज्यादा है. लेकिन हम लोगों का जो बात हो रहा है उसमें से ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली क्रॉप
पर फर्क पड़ेगा, बिकॉज मॉइस्चर लेवल उतना अच्छा नहीं है, सोइंग कम हुआ था, प्लस ठंड नहीं मिल रही है, वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये साल रियली चैलेंजिंग है, ये साल बड़ा डिफिकल्ट है टू प्रेडिक्ट करना चने की क्रॉप कितनी आएगी। दूसरा नंबर, अपने पास कैरी ओवर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कैरी ओवर क्लैरिटी नहीं है कि कैरी ओवर कितना है, प्राइवेट के पास कितना था। पहले मोटा मोटी समझ में आता था, अभी गवर्नमेंट के पास 15 लाख टन का फिगर बता रहे, बट वो भी समझ नहीं आ रहा है कि कितना पीडीएस में जाएगा, कितना भारत दाल में जाएगा, कहाँ पे बफर स्टॉक में कितना रहेगा। और प्राइवेट प्लेयर थक चुका है, वो इतने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन और इतने पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पल्सेस में काम करूं या नहीं करूं। बिकॉज काम करने से आप देखेंगे, अगर 10 केसेस को आप देखेंगे तो 10 केसेस में 8 लोग रो ही रहे, बिकॉज आप पैसा लगा रहे हो, आप मैन पावर लगा रहे हो, आप गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो, बट आपको कोई गिनती नहीं है आपकी, आप क्या कर रहे हो, आपके लिए कोई सपोर्ट में खड़ा ही नहीं। आज आपको प्रॉब्लम है, जैसा आज आज भले ही गवर्नमेंट ने येलो पीस खोला, इट्स अ गुड डिसीजन, लेकिन अभी मेरे पास 3 दिन पहले 4 दिन पहले 3-4 एसोसिएशन झांसी के, ललितपुर के कुछ मिलर आए थे। वो बोल रहे यार हम लोग सडनली सर, हम लोग तो रास्ते पे आ गए, आज 15-20 रुपए किलो एक साथ टूट जाना, और हमारे पास में हम लोग अभी 2 महीने 3 महीने हमारे कमाने के काम थे, उसमें आज हम लोग को तकलीफ हो गई है। तो हर लेवल पे अपने अपने प्रॉब्लम्स है पल्सेस इंडस्ट्री में। अब क्रॉप की तरफ अपन जाते हैं तो क्रॉप देखिए, सारी क्रॉपें कम है इस साल। आप भली वो रार की देख लीजिए, या मूंग की देख लीजिए, या उड़द की देख लीजिए, खरीफ में तो सारी कम है। अब आप रबी पे आ जाइए, चने का जो पिक्चर दिख रहा है वो भी क्रॉप कमी दिख रही है। ओनली लेंटिल में थोड़ा सा पिक्चर रोजी दिख रहा है। बाकी आप काबुली का भी, हमारे डबल के जी बता रहे थे कि काबली की सोइंग अच्छी है तो काबली की क्रॉप अच्छी होगी। अब बाकी लेंटिल और काबली छोड़ दो, तो बाकी क्रॉप है नहीं। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट को अगर कल कुछ अनड्यू इसमें हो गया तो गवर्नमेंट जाएगी कहाँ पे, कहाँ से गवर्नमेंट इसको फुलफिल करेगी। तो एक डिसीजन तो सही लगता है कि ठीक है इन्होंने येलो पीस खोला है, बहुत कम टाइम के लिए खोला है। अब ब्लैक सी में आज इतने प्रॉब्लम्स है, लोगों ने वेसल माल बुक किए, इनका माल यहाँ पे 10 दिन पहले आना चाहिए तो इम्पोर्ट नोटिफिकेशन होगा। अभी हम लोग का यही गवर्नमेंट से दरखास्त है कि ठीक है आपने खोल दिया तो एटलीस्ट बीएल को 31 मार्च तक का बीएल कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू दी पोर्ट, द बीएल शुड बी एक्सेप्टेड बिफोर द 31 ऑफ मार्च। तो क्या होगा कि आज ब्लैक सी के इतने प्रॉब्लम्स है, आपको भी पता है, रोज सुन रहे हैं, वहां पे अभी भी इश्यू सॉल्व नहीं हुए, फ्रेट बढ़ गए हैं, कुछ शिपिंग लाइन फिर से पैसे ज्यादा मांग रही है जिनके प्री कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो ये एक है। दूसरा, मैं एक लार्जर पिक्चर देख रहा हूँ कि अगर कहीं चने की क्रॉप बहुत कम आ जाती है तो अपने पास में डिफिशिट बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये 45-50% तो क्रॉप अपनी एंटायर पल्सेस बास्केट की यही क्रॉप है। अगर इसमें 10-20% भी फर्क आता है तो एक दो छोटी छोटी क्रॉप तो ऐसी उड़ जाती है, इसमें मूंग उड़ जाता है, उड़द उड़ जाएगी, तुअर उड़ जाएगा। एक अगर चने में 15% का शॉर्टेज है तो उसमें आपका उड़द का एंटायर क्रॉप चला गया, आपने उसमें मूंग का एंटायर क्रॉप चला जाएगा, अगर एक एक इंडिविजुअल क्रॉप की बात करेंगे तो अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए, पहले तो प्रिडिक्ट करना। दूसरा, मैं होप करता हूँ कि वेदर सपोर्ट करे अपना, और फॉर भगवान के लिए ये क्रॉपें थोड़ी ढंग से आ जाए। नहीं तो अगले साल देखो, न कैरी फॉरवर्ड है अपने पास में, न कोई अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है। आज अगर अपने चना लेने भी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की 5 लाख टन की क्रॉप है, वो ऑलरेडी 4 लाख टन तो एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो लाख टन आपको क्यों गवर्नमेंट खोल के बदनाम होगी कि मैं लाख टन के लिए कि मैंने काला चना खोल दिया है। तांजानिया का एलडीसी कंट्री का वैसे ही चना आ जाता है, उसके लिए कोई खोलने की दरकार ही नहीं है। तो अब ये सोचना पड़ेगा ये गवर्नमेंट को भी, और उनको अब ये वापिस थोड़ी पॉलिसी को कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि अपन आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हो गए तो हो ही अपने यहाँ पे। लेकिन लेकिन जो जो वेदर पैटर्न देखिए, गवर्नमेंट अच्छा एफर्ट्स कर रही है, इसमें नो डाउट। गवर्नमेंट ने काफी इनपुट डाले 5 साल में, बहुत अच्छे काम हुए जो हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग 25-30 साल से देख रहे हैं। जो द वर्क, द वे द गवर्नमेंट इज डूइंग, इट्स रियली फैबुलस। Really, they are putting all effort, they are putting technology, they are putting manpower, everything is going very well, but weather is not in our hand. तो गवर्नमेंट को ऐसा रहना चाहिए कि इनको अभी और अपने डोर्स ओपन खोलना चाहिए, ओपन पॉलिसी करना चाहिए, ताकि आज अपने ऑस्ट्रेलिया 2 मिलियन टन की क्रॉप कर सकता है। आपको अगर कहीं डिफिसिट हो गई तो आपको 2 मिलियन टन का अपने आया हुआ भी काला चना इनको, आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट कीजिए। आज और कंट्रीज है वो डरते हैं, उनके पास में बहुत लैंड बैंक है। मैं ब्राजील गया था, ब्राजील वाले बोलते हैं कि भाई हमको कॉन्क्रीटनेस होना, हम मूंग में मर गए थे, हमने मूंग एक्सपोर्ट किया था तो हमारे मूंग के ट्रांजिट के कंटेनर हमने दुबई घुमाए,
हमको $1000 का मूंग हमको $600 में बेचना पड़ा, प्लस $400 हमारे को और खर्चे लगे, तो हमारी तो रकमें साफ हो गई। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट को अपना पेट समझ के जो भी एक्सपोर्ट हुआ है उसको संज्ञान में लेके उसको रिलैक्सेशन देना चाहिए। एक हाँ, मैनिपुलेशन कोई कर रहा है तो उनको वो निपटे, लेकिन जो ऑथेंटिक वे है कि भाई आपने बोला कि आप 31 मार्च तक जितना चाहे उतना चना एक्सपोर्ट कर सकते हो और सडनली आप 15 फरवरी को आके बोलते हो कि सारा बंद हो गया, तो उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि लोग पैसा वहां लगाते हैं, रातों रात कोई एक्सपोर्ट नहीं आता, ट्रांजिट टाइम लंबा रहता है। ये एक बात मेरे को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर इसमें सुनना चाहे, इससे लेना चाहे तो। और अवेलेबिलिटी देखिए, आज येलो पीस है अपने पास और लेंटिल है, अगर कोई क्रॉप में अपने को बड़ी फर्क आएगी, और दोनों भी आज 1.5-2 मिलियन टन के, तो दोनों मिला के 1.5 से 2 मिलियन टन का इंपोर्ट अपने स्मूथली और कर सकते हैं अगर कोई आ गया तो। अभी गवर्नमेंट को ये देखना है। जहां तक चने का सवाल रहा, मुझे पूरा साल चना स्ट्रांगली लग रहा है। अभी ठीक है, टाइम बिंग भारत दाल का सप्लाई हो रहा है, या थोड़ा दिसंबर में थोड़ा फल सब्जियां सस्ती रहती है तो थोड़ा कंजम्पशन भी लो रहता है। बाकी अगर आप देखोगे तो चने का कंजम्पशन आगे बढ़ना है। जो सप्लाईज है, अभी प्रेशर है कि गवर्नमेंट नाफेड की डिलीवरी लोग उठा नहीं पाए थे या प्राइसेस घट गए थे, तो वो डिलीवरियां भी उठ जाएंगी। तो बाजार में इतना चना अवेलेबल नहीं है, जितनी डिमांड के सामने सप्लाई कंफर्टेबल नहीं है। बट क्या है, छोटी सप्लाई और डिमांड अभी कम है तो वो बड़ी दिख रही है। बट आप अगर बात करो तो सप्लाई इज कांस्टेंट है सप्लाई में, और आगे जाके धीरे धीरे चना पॉजिटिव ही रहेगा। हो सकता है टाइम भी चना फरवरी, अभी महाराष्ट्र कर्नाटका तो जनवरी एंड से आना चालू हो जाएगा, फरवरी से चना एमपी राजस्थान थोड़ा थोड़ा बोलना चालू करेगा। मार्च से मुझे लगता है वापिस चना फिर अपने अपने मुकाम पे रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहेगी, इलेक्शन है, ये अपने हिसाब से मार्केट रेट पे चना, अभी ये बोल रहे हैं हम मार्केट रेट पे चना प्रोक्यूरमेंट करेंगे तो एक बार के बाजार इन्फ्लेट हो जाएंगे। बाजार 60-65 के रेंज में ये लोग अपना, इनको तो कुछ लगेगा नहीं, ये तो अपना चना ले लेंगे उस दाम से। अब मरेगा अगर उस दाम से कोई स्टॉकिस्ट करेगा मिल वाला, तो वो मरेगा फिर उस दाम से, तो वो वहां पे भी मरण है। तो अभी इनको एक पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए। आज यही नहीं पता नाफेड के पास माल कितना है, उनके ना तो कोई वेबसाइट पे आता है कितना माल है, कितना बफर स्टॉक के लिख रखा है। ये हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करके, भाई 5 लाख टन इन्होंने अभी यहाँ पे टेंडर सेल के लिए रखा है, 10 लाख टन इन्होंने बफर स्टॉक के लिए रखा है। हमको पिक्चर ही नहीं मालूम पड़ती। आज आज सबसे बड़ा प्लेयर है जो पूरा गवर्नमेंट को रेगुलेट कर रहा है, पूरा मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, आज उसकी फिगर क्या है उसके पास, वही हमको नहीं मालूम कि आज नाफेड के पास में है तो कितना माल है। क्या उनके पास 12 लाख टन है या 11 है या 14 है, सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं कि 15 लाख है, कोई बोलता है 17 लाख है, कोई बोलता है 13 लाख है। और तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये बड़ा कॉन्शियसली वॉच करने जैसा है। चना पूरा साल पैसा देगा ऐसा मेरा मानना है, अच्छी टाइम पे एंट्री करेंगे आप रखोगे तो। येलो पीस टाइम भी आ रहा है, ये चने को थोड़ा प्रेशर करेगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी येलो पीस नहीं आ रही है। 5-6 लाख टन 7 लाख टन, आप पूरे क्रॉप के सामने 5% का सब्सटीट्यूट आ रहा है, तो उसको इतना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर सकता है। बाकी इन रियलिटी पे इतना कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, पैरेलली येलो पीस की क्रॉप भी इंडिया की धीरे धीरे सुधर रही थी। जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, किसानों ने येलो पीस हुआ, अपने 2.5-3 लाख टन येलो पीस आता था, आज वो 1 मिलियन टन के ऊपर की क्रॉप हो गई है, ग्रीन पीस और येलो पीस मिला के। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हुआ है, और मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ही रहेगा, क्योंकि पल्सेस की सप्लाई बहुत स्ट्रांगली मतलब कमजोर है, आप ये समझिए, और इनको थोड़ा सा ख्याल रख के ही करना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट हो, अभी तन्मय जी ने भी काफी फिगर बताई है, वो काफी कन्विंस हूँ। हमारे नवनीत जी ने भी काफी बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने काबली का। तो देखिए आप लोग और इस पे व्यू रखिए, हमारे हिसाब से तो ठीक है, क्रॉप कैरी ओवर कम ही है, क्रॉप भी कम है, यील्ड भी कम है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। राइट, थैंक यू सतीश भाई, लाइक वेरी, अपने जो ट्रेडर की भावना है ना दिल से, बिल्कुल लाइक यू हैव शेयर्ड दैट, एंड आई बिलीव टुडे वी आर हैविंग फार्मर्स डे, एंड आई लाइक माय compliments to all the farmers who are growing beautiful food for all of us. लेकिन maybe it's a time we should also have a traders day. उनको भी, ट्रेडर्स को भी लाइक सम्मान कोई नहीं है, कोई नहीं खड़ा जी, कोई नहीं, ट्रेडर के लिए कोई खड़ा नहीं है। मैं सर, I'll write a letter to the honorable prime minister of India. Very good initiative, good initiative, you lead it, yeah.
we should also have a traders day, because like see, there are black sheep in every industry, right? Very But good. all the time, like to hammer down the traders is also not good. And now coming to like on a little bit concluding on the channa's pricing part of it and the production part of it. In fact, a month back, like after traveling to multiple states and seeing what's happening, right? I've projected that we might be having like less than 100 lakh tons or 10 million metric tons of channa production this year. I would further like to revise that. I still see like 8 to 9% further dip in what like I was able to see a month back because of the change in the weather patterns. And going forward, right, we have seen whatever the dip, like in the recently, it has been more of a panic reaction to one of the policies of the government, which I believe like government did a fabulous job in during festive season by controlling price of all the commodities, right? Whether it is tuar or urad or chana, they've been able to maintain those prices pretty well. And so far, like in a commendable job. But end of the day, I always believe like the supply and demand side always eventually decide like where the direction of the market would be. So maybe because of the election year, we might see more government intervention. But assuming that there are no too many intervention going forward, I believe like the direction of chana would be like post 15th of Jan on the upward side, for a very simple reason that actually like the productivity would be not as per like what we were expecting. So चने में मुझे तेजी लग रही है. So I believe and going forward whole of the year, as Satish bhai also like rightly mentioned, that there is opportunity to make money in chana for sure. But yes, be cautious because government policies can impact hugely. राइट. एक दाना अभी तो येलो पीस का नहीं आया है और सारी दालें हैं कोई 7% कोई 8% टूट गई है. So right, sentiments also play a very vital role. Not always the S&D, but the sentiments are always temporary and supply and demand is always like I'm saying fundamental long term. Now I'll again go to the next round of the discussion, starting with you, Rahul bhai. Like Satish ji, like mentioned a very important aspect of like the government policy part of it. Right. So I would like to आपसे मेरा question है, I would like to request you to understand how do you see like the yellow peas import and what could be the maximum or minimum, seeing the whatever scenario we are having, assuming that government might not extend, right? Let's say, assume that 31st March is the last date. By 31st March, how much do you see? Because if you see like the global trade, like 3 to 4 million metric ton is what actually like change hands, right? And out of that, उसमें से India कितना capture कर लेगा? And what is your view on how much India would be able to garner by 31st of March? Thank you. By 31st of March, I think we might import about 3 lakh tons of material. Because time period is 3 lakh ton. Time period is very short period है. और दूसरा ये जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी जो कार्गोस का चल रहा है उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है. जो शिपमेंट के डेट्स हैं, शिपमेंट के जो ड्यूरेशन है वो काफी बढ़ रहा है, 20 दिन बढ़ रहा है, तो फिर 3 लाख टन तो आ जाएगा मेरे हिसाब से. It might be possible. Right. Or subsequently, in case government like opens it infinitely, like for import of yellow peas, तब आपको क्या लगता है कि कितना ला पाएंगे हम? If the production is less, government will sure extend the peas import deadline. This I think they will not let the market goes up, and they will try their best. Like you see in past year, they are procuring, they are processing, they are selling, they are doing each and everything they can do it to control the market. If the prices moves ahead, I feel that they might extend the dates of matter pea. Right. Tanmay ji, your views on the same? कितना येलो पीस आपको लगता है आ पाएगा अगर रिस्ट्रिक्शन रखती है गवर्नमेंट 31st मार्च वाली, और कितना आ पाएगा अगर इनके रिस्ट्रिक्शन हटाती है? Well, Deepak ji, as of now, my calculation says that एक तो ये टाइमलाइन जो है ये काफी छोटा है, क्योंकि नॉर्मली अगर एक कनाडा से अगर आपको इंपोर्ट करके वेसल को यहाँ पर लेता है तो वो इंडिया के पोर्ट पर पहुंचते पहुंचते 60 to 65 डेज का रफली एक टाइम टेनर है. आई एम इंक्लूडिंग दैट कि पीछे जब ओरिजिन पर भी आपका लोडिंग अनलोडिंग एंड अदर एक्टिविटीज सबको इन्वॉल्व करके मैं ये ड्यूरेशन आपको बता रहा हूँ. सो कुछ वेसल्स ऐसे भी होते हैं कि जो 35-40 डेज में भी पहुंच जाते हैं. कुछ वेसल्स हैं जो 25 दिन में भी, जैसे अभी चाइना का एक वेसल था जो कि हम ट्रेड में सब सुन भी रहे हैं कि एक हाई सीज में ट्रेड हुआ है एंड
कुछ कंटेनर्स हैं जो कि इंडिया में उसको ट्रेड करके अभी मंगवाया गया है चाइना के थ्रू, तो दैट काइंड ऑफ वेसल्स में रीच अर्ली, मोस्ट प्रोबेबली इन अर्ली जुलाई और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक में अपने को कुछ तो इंपोर्ट्स अपने को देखने को मिल जाएंगे। और दुबई से भी कुछ माल पड़े हुए हैं, दुबई के यहाँ पर भी स्टॉक्स हैं। तो ओवरऑल सब मिला जुला के मेरा जो अंदाजा है, जैसे राहुल जी ने भी अभी बोला कि राहुल जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 लाख टन के आसपास का, तो 2.5 से 3.25 लाख टन का भी मेरा भी एक्सपेक्टेशन था। बट कंसिडरिंग द रेड सी फैक्टर, जो अभी रेड सी में जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, इसके वजह से कुछ शिपमेंट्स जो हैं डिले हो सकते हैं। देयर आर प्रोबेबिलिटीज स्पेशली फ्रॉम कनाडा। तो उन सबको मिला जुला के आई एम एक्सपेक्टिंग, एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक 2.25 से 2.5 लाख टन के रेंज में हम मार्च तक में इंपोर्ट कर सकते हैं येलो पीस, विच इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। क्यों? 2.5 लाख टन से येलो पीस का कुछ होने वाला है नहीं इंडिया में। और अगर गवर्नमेंट अगर इस रेस्ट्रिक्शन को अगर एक्सटेंड करती है, तो वी में सी कि इस एक्सटेंशन से पहले एक चीज अपने को समझना है कि सर, जब इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था येलो पीस के इंपोर्ट्स पर फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स, जब उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करना चालू किया था येलो पीस के इंपोर्ट्स को, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आए थे, फिर उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई एंड अदर थिंग्स वर देयर एंड नाउ इट हैज कंप्लीटली बैंड आफ्टर सम टाइम इन 2019 ऑनवर्ड्स। तो वो उसका एक इम्पैक्ट ये आया था कि कनाडा में येलो पीस का एक तो प्रोडक्शन लेवल जो था वो गिरा, और वो प्रोडक्शन लेवल गिरने के बाद में एक कनाडा को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है फ्रॉम चाइना। चाइना ने अपनी फीड स्टॉक्स को ठीक करने के लिए येलो पीस का उन्होंने बहुत इंपोर्ट किया है। आई थिंक सतीश जी हैं, सोहेल जी हैं, ये सब इनसे एग्री करेंगे मेरी बात से कि चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ येलो पीस राइट नाउ फ्रॉम कनाडा, और अदर ओरिजिन से भी वो बाई कर रहा है। तो अब 2.2 मिलियन टन्स की क्रॉप है कनाडा की, और उसमें से रफली 40% टू 45% इटसेल्फ बाइज चाइना बाइज। तो अगर चाइना अगर एक लमसम 50% की क्वांटिटी अगर वो लेके जा रहा है, तो हमारे पास अदर ओरिजिन्स भी हैं जहां पर कनाडा से माल जा रहे हैं। तो उन सबको मिला जुला के हमारे पास जो सरप्लस बचेगा, कि थ्रू आउट द ईयर भी अगर गवर्नमेंट ने अगर इसको ओपन भी कर दिया, तो अनटिल अनलेस कनाडा का नया क्रॉप नहीं आता है, तो रेसिडुअल क्रॉप में से जो करंट ईयर का जो क्रॉप है उसमें से मिला जुला के हम कुछ 7 लाख या 8 लाख टन तक का हम इंपोर्ट कर पाएंगे। उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। एंड एक चीज और मैं ऐड करूंगा जो राहुल जी ने भी बताया कि येलो पीस का एक्सटेंशन के बारे में। यस, गवर्नमेंट इज कंसर्न कि प्राइसेस को उनको किसी तरीके से भी कंट्रोल में रखना है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कमिंग आउट विद सेवरल मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो इसमें मेरे को भी एक प्रोबेबिलिटी ये लगती है कि अगर चने के प्राइसेस में अगर कोई बाउंस हुआ, हम सब जानते हैं कि सर इस बार क्रॉप सिनेरियो क्या है, सप्लाई टाइटनेस इज देयर, प्राइसेस बढ़ने चाहिए, मार्केट सब एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया क्रॉप ही नहीं है तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे इसमें, बिकॉज डिमांड एक एक लमसम भी अगर हम मान के चले तो 95 लाख टन का डिमांड तो है मार्केट में। मैं गए से गए समय की बात कर रहा हूँ कि अगर इतना अगर 95 लाख टन का भी डिमांड है, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास में वो सप्लाई नहीं है मार्केट में उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्मार्ट स्टेप लिया है कि उन्होंने येलो पीस के इंपोर्ट्स को खोल दिया कि भैया बेसन इंडस्ट्रीज को उससे रिलीफ मिल जाएगी। एंड दैट इज वाई आज आप देखें जो येलो पीस के प्राइसेस कुछ 18% 20% तक डिक्लाइन हो गए इस डिसीजन के बाद में। अदर पल्सेस के प्राइसेस में भी इम्पैक्ट आया, चने के प्राइसेस टूटे हैं, तुअर के प्राइसेस टूटे हैं। तो ओवरऑल मैं ये मान रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से, जैसा अभी आपने भी बोला कि आप भी बुलिश हैं और 15 जनवरी के बाद में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चने के प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे, बढ़ने भी चाहिए लॉजिकली बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई फैक्टर। बट अगर किसी तरीके की बाउंस अगर आती है चने के प्राइसेस में, तो आई थिंक गवर्नमेंट माइट टेक द डिसीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस येलो पीस इंपोर्ट। बट दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि हमारे पास ग्लोबली क्या अवेलेबिलिटी है और कितना माल हमारे पास इंडिया में आ सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 12 to 13 लाख टन इन चना। अगर हम 12 से 13 लाख टन का शॉर्टफॉल अगर देख रहे हैं चने में, और उसके अगेंस्ट में अगर हम 7 या 8 लाख टन का ही अगर इंपोर्ट कर रहे हैं येलो पीस, तो वो ब्रिज नहीं कर पाएगा अपने डिमांड गैप को।
तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। हाँ, टेम्पररी वी में सी कि भैया मार्च के बाद में अगेन अगर इन्होंने एक्सटेंड किया तो एक प्रेशर बन सकता है प्राइसेस के ऊपर में, अगर नहीं किया तो फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे इसमें। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है दीपक जी। राइट, सो तन्मय जी यहाँ पे से आई जस्ट लाइक टू ऐड जस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स हियर जो आपने बताया। सी चने की क्रॉप तो पिछली बार भी कम थी, लेकिन वहां पे बाय गॉड ग्रेस द ओनली गुड थिंग व्हिच हैपेंड फॉर द गवर्नमेंट वाज दैट दे वर हैविंग गुड स्टॉक। राइट, करीब करीब मेरे ख्याल से 36 लाख टन के आसपास गवर्नमेंट के पास पड़ा था। ट्रेडर के पास तो बिल्कुल माल नहीं था या मिल्स के पास तो माल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के पास माल था। अब तो वो जेब भी खाली हो गई है। तो यहाँ पे अगर क्रॉप शॉर्ट आती है तो आई बिलीव इस प्राइस पे प्रेशर आएगा। नाउ कमिंग टू लाइक द येलो पीस का एक्सटेंशन का, आई हैव बीन ऑलवेज लाइक इफ यू आस्क मी, आई ऑलवेज हैव हार्ट एट द राइट प्लेस, राइट। मैं थोड़ा सा कम निर्दयी रहता हूँ, राइट, बिकॉज द फार्मर्स, राइट। ये वाली बात है कि T20 का मैच चालू हुआ, फर्स्ट इनिंग खेल ली, जब उसने स्विंग कर ली, उसके बाद आपने बोला कि अब भैया ऐसा है, राइट, जो बॉलर 3 ओवर डाल सकता था वो 6 डाल सकता है। सो आफ्टर द स्विंग इफ यू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम, राइट, देन इट इज नॉट, आई से दैट जस्टिफाइड। एंड अगर 31 मार्च के बाद अगर आप इन केस इसको, इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ गया है, आपने देखा होगा 64-65 रुपए से लाइक 50 रुपए तक आ गया, तो किसान तो ऑलरेडी इज हैविंग द he has to bear the brunt of like the government policy, but at the same time अगर ये 31 मार्च के बाद भी एक्सटेंड किया जाता है, देन तो यू आर थ्रोइंग द फार्मर्स इन फ्रंट ऑफ वुल्व्स, राइट, बिकॉज उसका अराइवल के टाइम पे आपने इंपोर्ट कंटिन्यू किया है, राइट, तो वो तो लाइक 38 रुपए 40 रुपए के अंदर, राइट, पहुंच जाएगा, जो जब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ हिज कल्टीवेशन इज मोर देन 38 रुपीज। तो ही इनका लॉसेज, अभी तक लॉसेज नहीं, प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इफ 31 मार्च के बाद खोलते हैं so then he'll be incurring losses. So I suggest like people who are typically who make the maximum noises, typically middle class, upper middle class, right, जिनको सोशल मीडिया का एक्सेस है, आप और हम जैसे लोग जो वेबिनार पे बैठ पाते हैं, राइट, हमारी थाली के अंदर 2000 रुपए महीना बढ़ेगा, उसके सामने शायद किसी किसान के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। ये भी हमें सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। I'll go to सोहेल भाई। सोहेल भाई, आपको क्या लगता है येलो पीस कितने लेके आ रहे हैं आप? देखिए दीपक जी, येलो पीस 31 मार्च तक अराउंड इट विल कम 5 लाख टन प्लस और माइनस 10%। ओके, इतना आना ही आना है, इंक्लूडिंग कनाडा, ब्लैक सी, इसको नहीं रोक सकता है। द कंटेनराइज बिजनेस मे बी यू कैन बी स्लो, बट द वेसल बिजनेस विल बी देयर, सो दिस मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विल बी 100% बी देयर। ओके, एंड इफ अगर इतनी क्वांटिटी नहीं आती है तो खोलने का कोई मतलब ही नहीं था, आएगी इतनी क्वांटिटी। राइट, तो सोहेल भाई, इसके अंदर एक और चीज अभी ने बहुत अच्छी बात की थी, लाइक तन्मय जी ने और राहुल जी ने, राइट, के ना कंटेनर का चाइना से भी लाइक जो चाइना की तरफ रूटेड थे, राइट, वो सप्लाई इंडिया की तरफ रूट होने वाली है। अब चाइना ने तो ये पोजीशन 380, 390, $400 के अंदर ली हुई है, राइट। सो डोंट यू फील दैट एक्चुअली वी आर गिविंग अपॉर्चुनिस्टिक बेनिफिट टू चाइना, राइट, बिकॉज ओरिजिन वाले का जो भी माल है उससे तो बेच दिया है चाइना को। अब नाउ व्हेन यू रूट द चाइना's कंटेनर टू इंडिया, in a way actually we are making traders of China rich and our traders poor. नहीं नहीं नहीं, ये बात अभी तक क्या है, थोड़ी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना से डॉक्यूमेंटेशन इतना इजी नहीं है, ठीक है। अदर कंट्रीज से आ सकता है माल, चाइना से अभी तक फाइटो का डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हुआ है, सो इट इज नॉट दैट इजी। जो एन रूट वेसल है वो चेंज कर सकते हो, जो पहुंच गई है स्टॉक्स उधर पड़े हैं, वो यहाँ से इतना आने में इतना इजी नहीं है। बट माल वेसल के अंदर आएगा, पक्की बात है, चाहे ओरिजिन से आवे या और कोई डेस्टिनेशन से आवे, यहाँ पे एक बार माल आएगा। उसके सामने आप ये भी देखो, तुअर की फसल भी इट्स यूजुअली सेम एज लास्ट ईयर। People says it is around 30-32 lakhs, but I don't see tuar is not more than 27-28 lakhs, ठीक है। तो तुअर इज ऑल्सो कंसर्न। एक बार तो सब थोड़ी बहुत अराइवल का प्रेशर है, अभी मंदी का, दिसंबर है, फ्रेश वेजिटेबल्स अराइवल है। ओवरऑल सिनेरियो फॉर पल्सेस इज वेरी गुड। Right. No, I agree, sir. And overall scenario for pulses is very good for importers, but overall scenario for pulses for farmers and the consumers and users, right, They will not open beyond 31st. They will not open beyond 31st unless and until there is a major change in the weather patterns. Otherwise, it's UP is the big state where where the votes of the farmers are most important, and the sowing has been more. This year we see around 1.1, 1.2 million ton of yellow peas. So I don't think so they will extend. Only in worst scenario they might, otherwise not.
दीपक जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा विद योर परमिशन। या प्लीज सर। जैसे कि सर आपने बताया और अभी जैसे सोहेल जी ने भी बताया कि सामने इलेक्शंस है और यूपी का एक बहुत बड़ा शेयर रहता है इलेक्शंस में, और अभी मटर की क्रॉप भी है वहां पर, और ऑलरेडी मटर में इतने मंदी आ चुकी है। तो गवर्नमेंट ने जब ये खोला था, पीस का इंपोर्ट को ओपन करने का जब डिसीजन लिया था, तो इन सब सारी बातों को उन्होंने असेस करके ही लिया था कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कितना हो सकता है इसमें। एंड वन थिंग इज डेफिनेटली देयर कि गवर्नमेंट जो है पीस को ऐसा कंसिडर नहीं करती है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करती है गवर्नमेंट अपने नजर में, जितना कि वो पल्सेस को करती है, चने को करती है, या तुअर को करती है, या उड़द को करती है। इनफैक्ट मूंग के केस में भी अगर हमने देखा है, तो मूंग में भी हमारे पास में खरीफ में देयर वाज अ गुड डेफिसिट, एक अच्छा गैप था हमारे पास में। इंडस्ट्री पूरी डिमांड ये कर रही थी, या फिर काफी ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए भी हैं गवर्नमेंट के पास में कि मूंग के इंपोर्ट्स को अलाउ करना चाहिए, मूंग का डेफिसिट है, या नेफेड के पास में या फिर ओपन मार्केट में जो अवेलेबल क्वांटिटी है दैट क्वालिटी इज नॉट गुड। सो दे वर डिमांडिंग कि भैया हमें मूंग कुछ खोल दो, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन में ही दे दो या क्वांटिटेटिव बार में ही दे दो, हम कुछ तो इंपोर्ट हम कर लें। बट गवर्नमेंट ने नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि मूंग, उड़द, चना और तुअर, ये जो है गवर्नमेंट के नजर में बहुत ज्यादा वेट रखते हैं। सेकेंडली, इन सब पल्सेस का वेट इन्फ्लेशन के ऊपर में सबसे ज्यादा है। सबसे पहला वेटेज आता है चने का, देन तुअर, इनफैक्ट सॉरी तुअर का वेटेज सबसे ज्यादा है इन्फ्लेशन में, फॉलोड बाय चना, उड़द एंड मूंग, देन कम्स टू लेंटिल्स। ठीक है। अब दूसरा चीज ये भी है कि गवर्नमेंट को सामने, टेक्निकली मैं जस्ट एक जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि गवर्नमेंट के पास में आज के डेट में, जैसा सतीश जी ने भी बताया, कि किसी को नहीं पता है कि कितना स्टॉक्स है। रफली गवर्नमेंट के हाथ में आज 16 साढ़े 16 लाख टन के आसपास का स्टॉक्स है ओवरऑल। इसमें से गवर्नमेंट का मैंडेट है कि 10 लाख टन हमको एज ए बफर हमको मेंटेन करके चलना है फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये 10 लाख टन में से 16 में से अब 10 अगर हटा दो तो बचा 6, और इस 6 के अंदर में दे हैव टू अकोमोडेट भारत चना दाल, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को सप्लाई करना है, सारी चीजें, सारे डायनेमिक्स है इसमें। ऑलरेडी 5.5 लाख टन के आसपास का या उससे कुछ ऊपर जो है भारत चना दाल में इन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है। और ये बचे हुए 6 लाख टन में से मेरा एक ये अंदाजा है कि करीब करीब 1.5 से 2 लाख टन जो है और वो भारत चना दाल में ये कर देंगे। क्यों? गवर्नमेंट का अब ये थिंकिंग है कि अगर प्राइस कंट्रोल करना है तो होलसेल के साथ साथ में रिटेल को भी हमको कंट्रोल करना है। तो वो दोनों साइड से अभी वो उसको प्ले कर रही है कि भैया इसको भी करना है। जो बहुत मतलब रिसेंट का एग्जांपल है, टोमेटो का आप ले लो। टोमेटो का प्राइसेस 200 रुपए, 250 रुपए पहुंच गए। उन्होंने क्या किया? इंटरवीन किया उन्होंने रिटेल में, ना कि होलसेल में। सिमिलरली दे आर डूइंग इन ऑनियंस। ऑनियंस के प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड थे 100 रुपए पहुंच जाएंगे, बट उन्होंने स्मार्ट मूव लिया, ऑनियंस के प्राइसेस को, रिटेल को उन्होंने कंटेन किया, रिटेल के प्राइसेस को उन्होंने बढ़ने दिए बाय डिस्पोजिंग देयर बफर स्टॉक्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस ऑफ 25 रुपीज पर केजी। तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब मटर जो है इसमें ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने इलेक्शंस हो, फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, ये गवर्नमेंट को भी दिख रहा है कि 20% प्राइसेस टूट गए हैं मटर के, और आगे अगर एक्सटेंड करते हैं तो हो सकता है 5-10-15% प्राइसेस और भी निकल सकते हैं। बट गवर्नमेंट ये देख रही है कि इसका नॉर्मल या एवरेज प्राइसेस तो 22 रुपए, 25 रुपए या 28 रुपए हुआ करता था। तो अभी भी अगर ये 45 रुपए के भाव में है या 42 रुपए के भाव में है, तो ये अभी भी डबल प्राइसेस है। तो कहीं ना कहीं सर अपने को ये इस तरीके से भी थोड़ा सा, मतलब मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमको ये भी सोचना है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमारे, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड में मेरा क्या बेनिफिट है कि मेरे को भैया एबनॉर्मलिटी नहीं चाहिए, बट कम से कम नॉर्मल एक मार्जिन है। जैसे अभी सतीश जी ने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि 1000 रुपए का चीज उन्होंने 400 के नुकसान में भेजा, प्लस $400 और उन्होंने अपने पॉकेट से लगा दिए, तो एंड अप विथ नथिंग। तो एक जेन्युइन मार्जिन अगर आपको निकालना है तो आपको सारे डायनेमिक्स को सोच के चलना पड़ेगा इसमें। तो मैं बस वो यही डायनेमिक्स आपके एक मिनट दीपक जी, 1 मिनट मैं बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज सोहेल भाई। तन्मय जी, आपने जो बताया है कि गवर्नमेंट ने क्यों खोला येलो पीस, गवर्नमेंट को येलो पीस से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आई वुड जस्ट काउंटर योर टॉक्स
देखिए येलो पीस खोलने का दो कारण था. इट इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय द गवर्नमेंट. इलेक्शंस के रिलेटेड भी है. एक तो उनको चना एमएसपी पे मिलेगा. when they open the yellow peas, the sentimentally chana prices came down. Second thing, the yellow peas is correlated to pigeon peas, that is tur. Tur is the staple food in India. The lower middle class in UP and Bihar can consume with the matar dal. Okay, so they consume less. Tur dal. This is also important. So these are the price correlated. It's not that के फार्मर को क्या बेनिफिट हो रहा है और नहीं हो रहा है. उनको भी पता है कि 5-7 लाख टन अगर माल आ गया तो एक बार उनको माल मिलेगा एमएसपी पे चने का. चना उनके पास बफर नहीं है, ये उनको भी मालूम है. जो 16.5 लाख आप बता रहे हो या 17 लाख बता रहे हो, 6 लाख बेच देंगे, 10 लाख रहेगा. बट इलेक्शन ईयर है, उनको बफर करना बहुत जरूरी है. साथ में उनको तुअर भी क्रिएट करनी है, बफर स्टॉक. तुअर की फसल भी बहुत कमजोर है. तो तुअर के प्राइसेस भी आप देखो, 120 वाली लेमन नीचे आ गई है. तो तुअर भी उनको ओपन मार्केट में लेनी है, जबकि तुअर का उनका टारगेट है 10 लाख टन लेने का, इंपोर्ट और डोमेस्टिक मिला के. क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बात की बात है. बट एक बार उनको माल तो प्रिक्योर करना है. सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट आई स्टिल अप्रिशिएट इज अ वेरी स्मार्ट मूव ऑफ गवर्नमेंट ओपनिंग द येलो पी for a short duration. Sohil, even I agree with your view that government has taken a very smart move by opening this yellow peas import. What I am trying to say कि गवर्नमेंट को कंसर्न येलो पीस के लिए नहीं है या फिर फार्मर के लिए नहीं है. आपने जैसे बताया ना, मैं भी उसी डायरेक्शन पर ही बात कर रहा हूँ. गवर्नमेंट का मेन मोटो ये था कि उनके पास में बफर स्टॉक्स इज डिप्लीटिंग वेरी फास्ट. और I agree. So तन्मय जी, in fact आप और सोहेल भाई बड़ा सिमिलर, you're talking the same thing, right? कि गवर्नमेंट has been very smart, एक सेंटीमेंट क्रिएट करके सबके प्राइस नीचे लेके आ गए हैं. तुअर के भी नीचे लेके आ गए, चने के भी लेके आ गए. अब जब प्रोक्योरमेंट आएगा, राइट, तो भाव नीचे रहेंगे. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारा किसान यही चीज बोलता है कि जब मैं माल लेके आता हूं तो भाव कम होते हैं, जब माल बाद के अंदर ट्रेडिंग कम्युनिटी बेचती है तो माल के भाव ज्यादा होते हैं. तो मुझे कभी भी 120 रुपए में तुअर बेचने को नहीं मिलती है. मैं 68 में बेचता हूँ, दुनिया 125 में बेचती है. So I believe, like, government has to think about the farmers sometime. While I think they have done fabulous job in maintaining the inflation. So second aspect I would like to passing reference में एक और देना चाहता हूँ. Sir, we have to also see about the nutrition security of the nation, right? Now, if you see that when you compare yellow peas with tuar, I'm not even going to chant. Yellow peas को अगर आप आमने सामने रखते हैं, sir, the amount of protein is substantially low in yellow peas and carbohydrates is high. Now, the problem is that India is a country which is having huge deficiency when it comes to the protein. That's why we are having 1/3 of our kids being stunted. So I think the government need to sit maybe after this election year में कुछ नहीं होगा, and invite people like Tanmay ji तो already government को advise कर रहे हैं, but Rahul bhai also, Sohil bhai also, HIMANSHU ji, Satish ji, Navneet ji, मुझ जैसे लोगों को एक रूम में बिठाना चाहिए और बोलना चाहिए how we go it holistically. Satish ji, what is your view on total possible imports of yellow peas? आपका क्या व्यू लगता है कि कितना तक आ पाएगा? It depends. Say 500,000. It will be more than 500,000 ton, 2.7 million ton. 5 to 7 lakh ton it can maximum come. Maximum provided how Canadian port operates, because already I have heard there are 5 to 6 vessels name is zooming into the market. So say around 3 to 3.5 lakh from Canada. Then from Black Sea it can come to 1.5 to 2 lakh ton. So it's around 5 to 6 tentatively it looks like. But if suppose government extend the deadline of 31st March, which they have to just correct by, the BL can be accepted up to 31st March, then it can come more than 7 lakh metric ton. Because availability is there in the Canadian port as well as in Black Sea. The availability is no issue. Even the availability of 1 million ton is there. But the sudden short period, it's very difficult to manage this transit. Right. I think trading community should be very happy about opening of yellow peas. 7 लाख टन का अगर ट्रेड करने का मौका सडनली 3 महीने में मिल जाता है तो वो वाला बोलते हैं ना, दोनों हाथ घी के अंदर और सर कढ़ाई के अंदर. I'll go to Himanshu. Himanshu, your views will be also solved. Suppose the cargo is not coming up to the mark, then no purpose of opening the yellow peas, because आपको 2-2.5 लाख टन 3 लाख टन आ रहा है तो फिर आप इधर भी बदनामी ले रहे हो और आप उतना कॉम्पेंसेट भी नहीं कर पा रहे हो आपके शॉर्टेज को. तो शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को देखना चाहिए.
I totally agree, sir. I totally agree कि like ज्यादा माल आएगा तभी गवर्नमेंट को रिलीफ मिलेगा and कंज्यूमर को भी. हिमांशु, your views, yellow peas, how much import do you see? सर मैं थोड़ा सा डाउन साइड में बैठा हूँ. मुझे लगता है कि 2.5 लाख टन से 3 लाख टन के आसपास होना चाहिए. और क्योंकि देखो दिन बचे हैं कम, 3 महीने 2.5-3 महीने में क्या ही आ पाए. और अपना ट्रांजिट टाइम, जैसे अपने दीपक जी बोल रहे थे, तन्मय जी बता रहे थे कि ये अपना ट्रांजिट टाइम भी ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है. दूसरी बात, जो भाव है कनाडा में भी, क्योंकि वी कीप ऑन टॉकिंग टू आवर सप्लायर्स ऑल्सो, थोड़ा सा उतना अभी उतना जील दिख नहीं रहा है वहां से भी. तो और अभी जो ये अपना ग्लोबली अपना जो शिपिंग लाइंस में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो यही लग रहा है सर कि 2.5-3 लाख टन तक निपटना चाहिए अप टिल 31 ये 2024 मार्च. इसके अलावा दो चीजें थी, क्विकली बोलना चाहूंगा कि एक तो सेटबैक लगा लास्ट ईयर, इस साल अगेन एक्सचेंज में भी कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद किया गया, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर एनसीडीएक्स में कॉन्ट्रैक्ट वापस चालू हो जाते तो प्राइस फ्लक्चुएशन को कुछ तो एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपन. तो वो अपन नहीं कर पाए, क्योंकि अगेन वो बैन 1 साल और कंटिन्यू कर दिया गया दिसंबर 2024 तक. सो वो एक है. और अगेन जो आप लोग बोल भी रहे हैं कि अभी क्या है ना, सेल्फ फार्मर्स के दिमाग में ना बेंचमार्क प्राइसिंग थोड़ा ऊंची हो गई है. तो जो सर कह रहे थे कि मुझे प्राइस नहीं मिलता है किसानों को, वो अब सोचेंगे कि यार भाव चने का 60 रुपए हो गया, जब मैं बेचने जाऊंगा तो 40 रुपए हो गया. ये थोड़ा सा है, लेकिन अब उनके माइंडसेट में 60 रुपए बैठ गया बेंचमार्क दिमाग के पीछे. तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा, प्रैक्टिकल चैलेंज रहेगा उस समय जब किसान माल बेचने आएगा. ओपनिंग के बाद क्या होगा, सिचुएशन बहुत अलग होगी, क्योंकि उस समय जैसे सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि डिपेंड करेगा कि प्राइसेस चने का क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इलेक्शन ईयर है, मैंडेट है. जैसे सतीश जी ने भी कहा था कि अगर अपन ओपन करेंगे तो अपने को 30 तारीख वाला बीएल चेक करना होगा. तो बेसिकली, और सभी लोग बात करें होरेका सेगमेंट की, मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग के बाद की कहानी थोड़ा सा काफी सारे वेरिएबल्स हैं उसमें इंक्लूडेड. अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी यही दिखता है ओपनिंग के बाद, क्योंकि फ्रेश क्रॉप भी अराइवल होगी, तो सिचुएशन एडहॉक बेसिस में होनी चाहिए, क्योंकि अगेन आर्बिट्राज उसी हिसाब से रोल प्ले करेगा बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज की उस समय क्रॉप क्या आ रही है, गवर्नमेंट के मैंडेट्स क्या हैं, पी इंपोर्ट्स में गवर्नमेंट क्या पॉलिसी दे रहा है. लेकिन अभी जो इमीडिएट दिख रहा है, एज अ ट्रेडर कम्युनिटी हम इमीडिएट पे ज्यादा देखते हैं, तो इमीडिएट जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, 2.5-3 लाख टन का आसपास होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेच बहुत कम है. तो दैट्स इट सर. परफेक्ट. नवनीत जी, योर व्यूज. आपका भी छोले के अंदर लोग है ना येलो पीस जाने लग जाएंगे, तो आपके छोले भी कम बिकेंगे, तो आपका क्या व्यू है, कितना आ जाएगा? नहीं सर, देखिए येलो पीस के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाऊंगा और बोल पाऊंगा, बट मैं जो रशिया से जो मैं ट्रेड देखता हूँ, वी आर वेरी स्ट्रांग इन रशियन ओरिजिन्स. रशिया से जो भी येलो पीस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, वो सब हर बंदा, हर ट्रेडर जनवरी शिपमेंट लोडिंग मांग रहा था. बट क्योंकि जनवरी में लोडिंग वो मांग रहा था, और रशिया में हमेशा बैकलॉग्स रहते हैं, रशिया में कभी भी शिपमेंट टाइम पे नहीं चढ़ता. और ये जो अभी रेड सी वाला एक नया मैटर हुआ है, इससे ट्रांजिट टाइम्स 15 दिन बढ़ गया, प्लस 1 to 2 वीक्स का बैकलॉग बढ़ गया. अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, नवाशिवा पे और हजीरा और इन पोर्ट्स पे अगर एक वीक वेसल नहीं लगती तो 4 से 5 हजार कंटेनर का बैकलॉग हो जाता है. तो ये जो एक बैकलॉग हुआ है, ये हमें आगे जाके ये अराइवल्स में, वेसल्स का मुझे नहीं पता, वेसल्स ऑब्वियसली टाइमली आ जाएंगे क्योंकि वो एक अलग वो है स्ट्रेटेजी. बाकी जो कंटेनर शिपमेंट है, स्पेशली फ्रॉम ब्लैक सी, आई मस्ट से जिसने जनवरी लिया है उसको भी डाउट होना चाहिए कि इट विल अराइव ऑन टाइम. सो माय आइडिया, more or less 500,000 ton yellow peas will be come during this side, mostly from the vessel side. परफेक्ट, परफेक्ट. हमारे काबुली में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज नॉट एनीथिंग, बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा काफी हाई प्राइसेस थे. इट इज आउट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, तो होरेका का प्रोडक्ट है, सो इट इज नॉट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी देयर. हमारे यहाँ अगर हमारा जो पूरा है वो डिमांड सप्लाई से है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट का कोई ड्यूटी रिड्यूस करने का काबुली पे कोई इंटरवेंशन होगा. तो आई एम नॉट एनीथिंग ऑन दैट. राइट, इसलिए आपके सर पे कोई शिकन नहीं है सर, हम सबके देखे सबके यहाँ झुर्रियां पड़ गई है. मेरे हिसाब से I think I deserve more chicken because our product is fluctuating. दूसरों के प्रोजेक्ट 50-100 रुपए में तेजी मती होते हैं, हमारे प्रोडक्ट 1000 रुपए की तेजी मती एक दिन में होती है. So we have to be more chicken. That is I covered with pagdi. that was good one. So on that note, actually, I would also like to give my views. I tend to be like more with what Rahul ji and Tanmay ji were talking about, right? I see that 3-3.25 lakh ton से ज्यादा
शायद माल नहीं आ पाएगा येलो पीस का, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ओपन नहीं करती है. नाउ वेदर गवर्नमेंट विल ओपन इट और नॉट, फर्दर एक्सटेंड करेगी नहीं करेगी, आई वोंट लाइक टू गो इनटू करेगी कि नहीं करेगी, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, राइट, प्लीज डोंट डू इट, राइट, वी हैव टू बी फेयर टू अवर फार्मर्स, राइट. हमने बोला कि आप सेल्फ सफिशिएंट, एंड दिस होल लॉजिक ऑफ बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, अगर आप किसान को हर जगह ठोकर मारेंगे. 2 लाख टन जब बैन हुआ तो उससे पहले 2 लाख टन का हमारा प्रोडक्शन था, वो आज खींच के उसको 10 लाख टन तक लेके आ गए हैं, राइट. सो हैट्स ऑफ टू अवर फार्मर्स. अगर आप उनको हम इस हालत में छोड़ देंगे कि लाइक अगेन दे आर स्क्वायर back to the square one, right? Do you think next time when we'll go and make a call to the farmer to become self-sufficient in pulses, they will walk that talk? अभी प्राइस हाई होते हुए भी आपने देखा है कि लोग फसल नहीं उगा रहे हैं, राइट? क्यों नहीं उगा रहे हैं? बिकॉज दे नो कि दैट गवर्नमेंट विल डू समथिंग एंड विल एक्चुअली व्हेन उनका अराइवल आएगा वो प्राइस तोड़ देंगे. इसी कारण सोइंग कम करते हैं वो. एंड दिस इज वेयर एक्चुअली वी हैव सीन दैट अगर वापस चने में यही होता है कि अगर एमएसपी के नीचे, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट एमएसपी के नीचे प्रोक्योर कर पाएगी. However, assume कि अगर ऐसा होता है कि when arrivals आते हैं एमएसपी के नीचे भाव चला जाता है तो किसान will again lose their hope, and I think they are on the बहुत छोटी सी धागे से बंधे हुए हैं वो. 1 या 2 बार और अगर उनकी हमने होप तोड़ी, I believe a lot of farmers will get out of farming. With that note, I would request all those who are participating today and seeing this webinar on YouTube as well as LinkedIn. We are having 2 excellent events coming up. One is event coming in Mahabalipuram, close to Chennai, which is India Agri Food and Feed Summit, and second is South Asia Agri Summit, which is happening in Bangkok. I think we are having we are having Mr. Suvir, who is joining us on behalf of India Agri Food and Feed Summit. Suvir ji, can you show us your face and mic, and if you want to make a request, I would be more than happy to consider. Yeah, please. Thanks, Mr. Deepak. As you all know that Indo Agri Food Feed will be coming in Mahabalipuram on 8th, 9th and 10th. There's a big conference exhibition award will be going on. And Myanmar, Africa, Canada, this Mozambique, all India will be participating into it. And first time we are announcing this show to Chennai. Chennai is big market of it also, and they are importing in a huge. So there is a big opportunity to conduct this show. And as we are doing these shows from last 20 years, so worldwide there will be a good networking opportunity and big opportunity for agri-food business. So I'm just inviting you to take participation, and we are looking forward. Thank you. So you're on mute. Yeah. So can we just extend it just for a couple of more minutes? That's some very interesting question, right? So Satish ji, first question to you. If government wants to control the market, then why the government offload its stock at higher rates in the market? Sir, your views on this? Which cargo they are offloading at higher rate? Sir, government, they are talking about chana only, because I think बीच में चना कुछ 62-63 इतना तो नहीं है ना. अभी आज मेरे को लगता है लास्ट टेंडर नाफेड का गया था, इट्स अराउंड 56-57. नहीं सर, पहले की बात कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट जो तो उस टाइम ही एमएसपी के 1-2 रुपए के ऊपर पे ऑफलोड कर देना चाहिए. हाँ. अब ये तो देखो वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो ऑफर नहीं कर रहे. जो प्राइसेस ऊपर गए थे उसको मेल्ट डाउन कर रहे थे, वो माल लिक्विडेट करके, ऐसा उनका बोलना है. See, what they are telling is that suppose if market has gone up say to 65 rupees a kg, and now we have a buffer stock in us, so we are just offloading the cargo into the market at a price determined by buyer and seller at the market price. So it eventually has come down to 58 rupees, 56. Now today it's around 56-57 rupees market rate. It's equal to the market rate, what prevailing into the market. क्वेश्चन सर ये है कि जो नेफेड ये जो पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक कि जो एमएसपी पे खरीदा है नेफेड ने और ऊंचे भाव पर क्यों बेचा है, ये क्वेश्चन है शायद. ओके. तो वो तो देखो वो आप पूछ सकते कि वो धंधा कर रहे हैं क्या, लेकिन आज बाजार में क्या कहावत है कि जब सरकार ही बिजनेस करने को उतर जाएगी, जब राजा ही धंधा करेगा तो प्रजा क्या करेगी. तो आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि राजा के पास में 3 मिलियन टन कार्गो है. एक कंट्री का जितना प्रोडक्शन नहीं है, 3.5 मिलियन टन का टोटल स्टॉक इन हैंड था उनके पास में एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन. तो आप बताइए मुझे कि अगर 3.5 मिलियन टन का उनके पास में स्टॉक है, कैरी ओवर कर रहे हैं,
तो एक कंट्री का प्रोडक्शन भी नहीं हो, 5 कंट्री का, पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्री जितना चने का प्रोडक्शन नहीं उतना अकेला नाफेड के पास और एनसीसीएफ के पास में था। अब अगर वही प्रजा अगर काम धंधा करेगी तो ट्रेडर, नाफेड आप 10-15% स्टॉक लेती है ना टोटल प्रोडक्शन का, बाकी 80% तो व्यापारियों के पास होता है, 10-20% किसानों के पास होगा। आप 20% 15% माल लेके पूरे बाजार की ऐसी तैसी हो जाती है उसमें। आज मैं पैसा लगा के आप सी देखो रियलिटी, आज अपना सुनने वाला कोई नहीं है। आज नाफेड ने माल ले लिया 10%, 15% ले लिया होगा पूरी प्रोडक्शन, मुझे नहीं लगता है 15% के ऊपर वो ले पाते होंगे, या 20% ले लिया, सो खर्च करो, क्यों पैसा तो गवर्नमेंट का लग रहा है, कोई प्राइवेट पार्टी का लग नहीं रहा है जो टेंशन लेवे कि मेरा पैसा लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का लग रहा है, नोबल कॉज है कि मार्केट को बफर स्टॉक का पोजीशन बनाना है, मैंडेटरी पॉलिसीज है, बना रही है। बट हो क्या रहा है कि मैं भी पैरेलली ले रहा हूँ। आज गवर्नमेंट वो नाफेड ले रही है, ऐसे एमएसपी आज 54 पॉइंट समथिंग है, उस दाम से ले रही है। एमएसपी के नीचे तो लेगी नहीं, बल्कि मार्केट नीचे भी रहेगा तो, और एमएसपी के ऊपर लेगी तो ये 2 साल में उन्होंने इंटरवेंशन किया कि हम मार्केट रेट से लेंगे। लास्ट ईयर उन्होंने तुअर ली, लास्ट ईयर उन्होंने चना भी लिया थोड़ा, है ना। तो अभी वो बोल रहे हैं कि उनको ये समझ में आ गया कि इस बार प्रोडक्शन कम है और दाम एमएसपी के ऊपर ही रहने वाले हैं, तो अगर अपने को मार्केट में एंटर होना है तो अपने को मार्केट रेट से लेना पड़ेगा। अब मार्केट रेट अभी 2 दिन से हमको सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कर्नाटक में 94 में 95 में तुअर ली है। तो अगर वो 95 में तुअर लेंगे तो अभी हमारे व्यापारियों के हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं। वो तो सोचेगा भैया एक बार 80 के घर में बैठा था, 80 आएंगे तो लेंगे, 85 आएगा तो लेंगे। अभी उनके पास में तो कुछ है ही नहीं लेने के लिए, तो बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। व्यापारी धीरे धीरे है ना इस पल्सेस के बिजनेस से निकलते जा रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आज पल्सेस के व्यापारी के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं खड़ा है। जो आ रहा है वो अपने जो मत पूछो, ऐसी गंदी कहावत है कि पल्सेस के व्यापारी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नॉट एन इश्यू सर। अभी सर एक और क्वेश्चन इसके अंदर पैरेलली इन्होंने जो पूछा है, राइट, वो क्वेश्चन इज अबाउट कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ डिमांड बन सकती है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बन सकता है फॉर सेम प्रोडक्ट चिकपी चना। चिकपी का सी साउथ ईस्ट एशिया में, अब साउथ ईस्ट एशिया में इतना चिकपी का कंजम्पशन नहीं है, मिडिल ईस्ट में है कंजम्पशन। साउथ ईस्ट एशिया में आइदर बांग्लादेश इज अ बायर और श्रीलंका, ओनली 2 कंट्रीज आर द बायर ऑफ द देसी चिकपीस। काबुली का ठीक है थोड़ा बहुत जाता होगा। अब आज बांग्लादेश है ना 2.5-3 लाख टन के ऊपर इंपोर्ट नहीं करता है। आज श्रीलंका का लाख टन तो छोड़ो, 50,000 टन का भी इंपोर्ट नहीं है। 2-2.5 लाख टन का पाकिस्तान का इंपोर्ट है। इस बार पाकिस्तान की भी सेम हालत है जैसी थोड़ी बहुत इंडिया की, वहां पे भी प्रोडक्शन कम है। लेकिन वहां वो पाकिस्तान में 2-2.5 लाख टन में पूरा पाकिस्तान नहा लेता है। आज इंडिया को आप समझ लो 20% भी क्रॉप कम हुई, और इनका जो गवर्नमेंट एस्टिमेट है कि इनका 120 लाख टन का है, तो 20% कम होने से 25 लाख टन की क्रॉप कम हो जाती है इंडिया की, इनके एस्टिमेट से। ठीक है, आज 25 लाख टन अपन पूरा वर्ल्ड में ढूंढ लो ना, तो 25 लाख छोड़ो, 10 लाख टन भी चना अगले अगले छोटे एलडीसी कंट्री का काबली मिला लो, रशिया का, यूक्रेन का काबली मिला लो, B90 मिला लो, सब मिला के भी आप 10 लाख टन चना नहीं ला पाते इंडिया में। अगर आप सोचो कि चलो मैं बेसन का ही डिमांड फुलफिल करता हूँ गोरेका का, बाकी छोड़ दो, मैं खड़ा खाने का चने के लिए मैं फाबा बीन्स को कन्विंस करूंगा उनको, चलो आप फाबा बीन्स खाओ, वो भी खाए नहीं जाएगी। तो बड़ा सीन डिफिकल्ट है। और कोई कोई अभी रास्ता नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब यहाँ से आगे क्या गवर्नमेंट पॉलिसी करती है, कितना कैसे वे में चलाती है गवर्नमेंट। इस साल गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो गई। साल की शुरुआत में लोग बोल रहे थे 70-75 चना पिएगा, बोलता रोज खाओ रोज पियो लस्सी, चना बिकेगा 80 क्या डाला, वो 65 के ऊपर गए ही नहीं। यहाँ 80 की बस्ती होगी लोगों की। अब वो कुछ कहावतें काम नहीं आती। गवर्नमेंट इतना इंटरफेरेंस कर रही है कि आदमी डर जाता है, भैया नहीं करना है मुझे, मेरे पास आज 200 टन की लिमिट देके रखी है, जब उनकी मर्जी हो जाएगी। आज उन्होंने बोला कि इंपोर्ट 2 महीने तक अलाउ है, आज सारा इंपोर्ट आ रहा है पल्सेस का, येलो पीस का। कल ये बोल देंगे इंपोर्ट मॉनिटरिंग हो रहा है, कल ये बोल देंगे कि 1 महीने में यू हैव टू लिक्विडेट योर स्टॉक ऑफ येलो पीस विद इन 1 मंथ। क्या हालत होगी जिन्होंने इंपोर्ट लाया। आज लोग 500 का भी ला रहे, आज लोग 480 का भी ला रहे। आज उनकी कॉस्टिंग, जिनका 500 का उनकी कॉस्टिंग 40 रुपए की है, प्रिवेलिंग बाजार 41 रुपए का है। 1 रुपए के रिस्क के लिए वो पूरा वेसल ला रहा है। ठीक है, जिनके नीचे लिए हुए वो 4 रुपए कमा रहे। आज वो माल आके अगर यहाँ पे इंडिया में लैंड होता है एंड देन गवर्नमेंट सडनली सेज कि वी हैव डिसाइडेड राइट नाउ you have to liquidate the entire stock by within 1 month, then where these people will go, who will listen their grievances and problems? Nobody is there to listen.
Correct, sir. I totally agree. So with that, I thank all of my panelists, Satish ji, for your very open, I'll say that pain point shared about the trading community. So किसान और ट्रेडर दोनों बेचारा परेशान है आज की तारीख के अंदर, and I think this thing should change. Sohil bhai, Himanshu from the corporate side, thanks a lot. Rahul bhai and Tanmay ji and Navneet ji, thank you a lot for putting all the data together and talking about it. To all the viewers, we'll meet again next week. And next week we'll be talking about pigeon pea, तुअर दाल, क्योंकि चने से ज्यादा सरकार मेरे ख्याल से तुअर से डरती है. So we'll talk about that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, Deepak ji, for calling. Thank you.